Good evening, everyone. Students, today we will discuss about admission of partner, and we will be just touching upon the capital adjustment part because I think a lot of students are facing problems over there. Let us start with this chapter. So I am not, starting with the introduction, with the revaluation part, and the calculation of the new profit sharing ratio, sacrificing ratio, treatment of goodwill. I am straight away I'm going to hit the capital adjustment part of admission of a partner. Right. When we talk about capital adjustment, what usually happens is that sometimes the new partner who joins in, his capital contribution may not be given in the question. That is one possibility. Or there is another possibility that wherein the capital contribution of the new partner is given, but the adjustment has to be made according to the capital contribution of the new partner. So there are different ways. Most let's understand what are these two prominent methods of capital adjustment. So first method is adjustment of old partner's capital basis new और incoming partner's capital. Now what does this mean? कि नया पार्टनर आ रहा है फर्म में, वो कैपिटल लेके आ रहा है, उसका जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो क्वेश्चन में गिवन है कि भाई लेट्स से ABC आर थ्री पार्टनर्स, C is the new partner, and whatever capital C is bringing in, that capital value is given in the question. अब उसके कैपिटल के बेसिस पे कैपिटल एडजस्टमेंट करी जाएगी. Method 2 is calculation of new partner's capital on the basis of capitals of the old partners. So two methods. So now method 2 में क्या है कि नए पार्टनर का कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा. You understanding the difference between these two methods? In the first method, the capital contribution of the new partner is already given in the question, and on the basis of the capital contribution of the new partner, capital adjustment will be done. In method 2, the capital contribution of the new partner will not be given, and on the basis of the capitals of the old partners, capital adjustment will be done. So let us understand these methods. In this particular session, I will be only focusing on the method 1, and I will be only focusing on a very simple question. So we'll do that question and I'll help you understand this concept. Let us move on to the next slide. So this is method 1. Let us read this question. It says X and Y are partners in the firm sharing profits in the ratio of 3:2. The remaining capitals of X and Y after adjustments are rupees 80,000 and rupees 60,000 respectively. तो यहाँ पे क्वेश्चन हमें साफ साफ बोल रहा है कि एक्स वाई दो पार्टनर्स हैं, उनकी रेशियो 3:2 है और रिमेनिंग कैपिटल्स की बात कर रहा है आफ्टर एडजस्टमेंट्स. सो व्हेन समथिंग लाइक दिस इज गिवन, हम इसको बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल बैलेंस. नाउ एडजस्टेड कैपिटल बैलेंस का मतलब ये है कि इस कैपिटल बैलेंस में एक्स और वाई का ये जो 80,000 और 60,000 का जो कैपिटल बैलेंस है, इसमें ऑलरेडी एडजस्टमेंट्स करी जा चुकी हैं. इसमें रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट ट्रांसफर हो चुका है या रीवैल्यूएशन का लॉस माइनस हो चुका है, इसमें रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं. ठीक है जी. और इसमें गुडविल की एडजस्टमेंट हो चुकी है. All of that has already been done, and now whatever is there, that balance which is being shown is basically an adjusted capital balance of the old partners. Let us move on to the next part of the question. It says they admit Z as a partner on his contribution of rupees 35,000 as capital for 1/5 share in the profits, which is to be acquired equally from X and Y. Now understand this very simply कि भाई Z is the new partner, उसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन 35,000 का है, क्वेश्चन में गिवन है. और क्या उसने बोला कि जो नया पार्टनर है उसका जो शेयर है, दैट शेयर इज
1/5 in the profits. All right. So another thing which has been given in the question is कि जो 1/5 share profits का है जो Z को मिला है, that he has acquired equally from X and Y. So इसको कैसे करना है, we'll see that. Let us see, go through the last part of the question and understand what is the question asking us to do. Here it says that the capital accounts of the old partners are to be adjusted on the basis of the proportion of Z's capital. तो क्वेश्चन ने साफ साफ बोल दिया है कि ओल्ड पार्टनर्स का जो कैपिटल है वो न्यू पार्टनर्स जो नया पार्टनर Z जो नया पार्टनर है उसके कैपिटल कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे होगा, उसके प्रॉफिट शेयर और कैपिटल कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे ओल्ड पार्टनर्स का नया कैपिटल बैलेंस बनाया जाएगा. ठीक है जी. So now what it says is that calculate the actual amount of cash to be paid off or brought in by the old partners for the same purpose. So we will now discuss the solution and we'll understand how such a question can be done. Okay. तो I hope मोटा मोटा अगर हम बात करें तो सारा आपको क्लियर हो रहा है बच्चों को कि पुराने पार्टनर्स दो हैं X और Y, 3:2 उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑलरेडी गिवन है. Adjusted capital of X and Y is given to us as 80,000 and rupees 60,000 respectively. This is adjusted capital after all the adjustments. Z is the new partner. 35,000 is his capital contribution and 1/5 is his share in the profits. How he has acquired this share of profits is also given in the question. Now we need to adjust the capital on the basis of new partners' capital contribution. Let us understand this. So when we talk about the solution, the first and the foremost thing which we need to keep in mind when the new partner's capital contribution is given and the capital adjustment has to be done on the basis of the contribution done by the new partner and his share in the profits, then we need to follow this simple formula. पहली चीज तो पहला स्टेप तो हमारा ये होना चाहिए कि हमें फर्म का टोटल कैपिटल निकालना आना चाहिए. तो यहाँ पे टोटल कैपिटल की क्या बात कर रहे हैं कि टोटल कैपिटल हम कैसे निकालेंगे. तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से अगर देखेंगे तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म बेसिस न्यू पार्टनर्स कैपिटल विल बी इक्वल टू, क्या दिया है हमने कि न्यू पार्टनर का जो कैपिटल हमें गिवन है और जो भी उसका शेयर है प्रॉफिट में शेयर है उसके रेसिप्रोकल से हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना. न्यू पार्टनर का कैपिटल कंट्रीब्यूशन shall be multiplied by the reciprocal of the new partner's profit share. The moment we do this, वैसे ही उसी मोमेंट में हमें फर्म का नया कैपिटल मिल जाएगा या टोटल कैपिटल मिल जाएगा जो हमने अभी फिक्स करना है ड्यू टू द चेंज which is taking place due to the admission of the new partner. Right. So how are we going to do that? With respect to the question which is given, let us understand that. So here total capital of the firm basis Z's capital contribution and Z's share in profits will be 35,000 is the capital contribution of Z, we know as it is being as given in the question, and 1/5 is the share in the profits. तो यहाँ पे उसने साफ साफ बोला कि रेसिप्रोकल से करना है. तो 1/5 अगर उसका शेयर इन प्रॉफिट्स है तो उसका रेसिप्रोकल विल बी 5/1. Once we multiply this 35,000 with 5/1, we get a value of 1,75,000. Okay, so 1,75,000 is the total capital of the firm. This is going to be the new capital. If we are going to do the capital adjustment, this will be the new capital of the firm. Now how are we going to find out the cash which is to be brought in or withdrawn by the old partners? वो हमारे लिए निकालना एसेंशियल है. क्यों? क्योंकि हमें ये तो पता चल गया कि फर्म का ये कैपिटल है, लेकिन फर्म का ये कैपिटल जो है इसमें पुराने पार्टनर्स का कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो भी निकालना जरूरी है. जब तक वो नहीं मिलेगा तो हम इसको आगे नहीं बढ़ा सकते. So let us understand how we are going to do this. तो हम क्या करेंगे, हम एक टेबल बना लेंगे. ठीक है, तो ये
आप ये टेबल जो मैंने आपके सामने रखा है, इट हैज गॉट 3 कॉलम्स and 3 rows, right? 3 or 4 rows. Let us see that. तो x is the old partner, y is the old partner. तो दो columns में हमने dedicate कर दिए x और y को. Then first thing we need to do is, in the first row, we are going to write, or in the second row, to be more precise, we are going to write the adjusted capitals of the old partners. So we write the adjusted capitals over here. x का ये क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी गिवन है, x का एडजस्टेड कैपिटल 80,000 है और y का एडजस्टेड कैपिटल 60,000 है. दिस इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन. तो हमने ये टेबल बनाया और टेबल बनाते टाइम हमने एडजस्टेड कैपिटल ऑफ x एंड y यहाँ पे लिख दिया. इसके बाद हम जो नया कैपिटल होगा x और y का, बेसिस द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म, वो हमें लिखकर दिखाना है, निकालना होगा बेसिकली. तो हमने यहाँ पे कर दिया. सो न्यू कैपिटल्स मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिए भाई. x के केस में जो नया कैपिटल उसका बन रहा है वो 87,500 का बन रहा है, y का 52,500 का बन रहा है. अब ये वैल्यू कैसे आई, वी विल डिस्कस दैट. ठीक है, तो हमने क्या किया, वी फाउंड आउट द न्यू PSR. सो वंस वी गेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, we divided this 1,75,000 into the new PSR and we got the values of the new capitals for x and y. तो x का तो जब हमने निकाला न्यू PSR, तो न्यू PSR कितना आ रहा है, 5:3:2 आ रहा है. इसकी कैलकुलेशन कैसे है, I will share that with you, but as of now 5:3:2 is the new PSR which we need to calculate, we need to find out. वो हमने निकाल लिया. Then इसके बेसिस पे हमने 1,75,000 which is the new total capital of the firm, उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया. तो 5/10 of 175 will give us a value of 87,500 and 3/10, 1,75,000 का 3/10 किया तो हमें वैल्यू मिल गई 52,500. अब यहां तक करने के बाद ये चीज साफ साफ हो जाती है कि x का जो नया कैपिटल है वो 87,500 का होना चाहिए, y का नया कैपिटल 52,500 का होना चाहिए. दिस इज द वैल्यू एट विच वी नीड टू फिक्स दीज कैपिटल बैलेंसेस. और क्वेश्चन हमें ऑलरेडी बता रहा है कि एडजस्टेड कैपिटल वैल्यू क्या है, 80,000 एंड 60,000. ठीक है जी. तो हम जब इसको कंपेयर करते हैं हमें पता है कि x की ऑलरेडी जो वैल्यू 80,000 की है एडजस्टेड कैपिटल की, इट इज फॉलिंग शॉर्ट. मतलब नया कैपिटल जो उसका बन रहा है 87,500 का बन रहा है, तो 7,500 से उसकी वैल्यू कम पड़ रही है. 7,500 x को लेकर आना पड़ेगा फर्म में, ऑब्वियसली बात है. और y के केस में y के एडजस्टेड कैपिटल बैलेंस 60,000 का है, जबकि नया कैपिटल बैलेंस जो उसको मेंटेन करना है वो 52,500 का है. तो y कैन विड्रॉ दैट मच अमाउंट ऑफ मनी बिकॉज y को ऑलरेडी ज्यादा कैपिटल बैलेंस है. सो दोनों के केस में डिफरेंस चाहे 7,500 का आ रहा है, लेकिन another thing which is to be noted is that x as a partner will bring in rupees 7,500 because his adjusted capital is less than the new capital, and the firm has decided to fix the capital balances as per the new PSR or as per the new partners capital contribution. ठीक है जी. And on the similar basis, y will withdraw 7,500 rupees because y already has an extra adjusted capital balance. So on this basis अगर हम ध्यान से समझेंगे कि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो समझ में ना आए, जो प्रॉब्लम क्रिएट करें. आपको सिर्फ ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपने जब कैपिटल एडजस्टमेंट में आपको ये देखना है, सबसे पहले कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन अगर आए तो सबसे पहले देखो कि नए पार्टनर का कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है या नहीं गिवन. अगर नए पार्टनर का कैपिटल बैलेंस नहीं गिवन है तो that will be most likely this method which we are doing, which is method 1.
तो आपको मेथड 1 को फॉलो करना है उसमें, ठीक है। और मेथड 1 में क्या है, कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर इज गिवन, सो most likely the capital adjustment will be on the basis of the capital contribution of the new partner and his share in the profits. ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो यहां पे जैसे इन्होंने बोला न्यू पार्टनर्स कैपिटल, जो हमने फॉर्मूला लगाना है दैट इज न्यू पार्टनर्स कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ द न्यू पार्टनर्स शेयर इन प्रॉफिट्स, इट विल गिव अस द टोटल वैल्यू ऑफ द न्यू कैपिटल। और उस कैपिटल को न्यू पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करके आप जो न्यू बैलेंसेस हैं, जो बैलेंसेस होंगे अभी फॉर द न्यू फर्म विद द न्यू पार्टनरशिप, वो आपको मिल जाएंगे, जैसे एक्स और वाई के केस में हमें मिल गए, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया क्या करना है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली उन्होंने सिर्फ यही पूछा है कि कितना विड्रॉ करना है या कितना लाना है, तो यहाँ पे ये यहीं पे क्वेश्चन एंड होता है। बट जस्ट इन केस क्वेश्चन आपको बोल दे कि भाई यू राइट जर्नल एंट्रीज फॉर द सेम, कि you have to write, find out the amount which is to be brought in or withdrawn by the old partners and also write the journal entries. Just in case ऐसा हो जाए तो आप journal entries भी लिख सकते हो। It's not a very typical thing. You can do it easily. बस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए माइंड में कि करना कैसे है, ठीक है जी। Let us move on to the next। मैं आपको so journal entry के लिए अगेन फॉर्मेट हमारे पास रेडी होना चाहिए। और उसके बाद जो x है, x has to bring in 7,500 rupees, so the journal entry will be cash account debit to x's capital account 7,500, ठीक है। क्योंकि x पैसा लेकर आ रहा है फर्म में 7,500, उसको कैश और लेके आना है एज कैपिटल, तो हम कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे और x के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट जर्नल एंट्री विल बी, बिकॉज y का ऑलरेडी एक्सेसिव बैलेंस था, y can withdraw money because his adjusted capital balance was more than the new capital balance as required by the capital adjustment। तो हमने इसको क्या किया, y के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, विच मीन्स कि हमने इसको विड्रॉ कर दिया, y ने ये पैसा विड्रॉ कर दिया। तो जस्ट इन केस ऐसे क्वेश्चन में अगर जर्नल एंट्री आ जाए तो आप इस तरह से जर्नल एंट्री बना सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल एंड यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। कभी भी किसी भी पॉइंट पे आपको कोई डाउट लगता है, क्लैरिटी नहीं है, यू कैन राइट अ कमेंट below the video and I will give you the explanation, or I'll come up with a new video with a better explanation, ठीक है। तो आप लोग मेरे से कनेक्ट रह सकते हैं through this through my YouTube channel and you can understand the concepts. If you have any doubts you can get in touch with me, you can write a comment and I'll come back to you on that। हाँ जी, अब बात आ जाती है न्यू पीएसआर की। हमने न्यू पीएसआर में उसको किया था, तो हमने वो न्यू पीएसआर कैसे निकाला, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। तो आप देखोगे कि क्वेश्चन ने साफ साफ बोला था कि जेड ने ये शेयर जो है उसका 1/5 शेयर उसने इक्वली एक्वायर किया है फ्रॉम एक्स एंड वाई, ठीक है। तो इक्वली किया यानी 1/5 का 1/2 उसने एक्स से लिया जेड ने, और 1/5 का 1/2 उसने वाई से लिया, ठीक है ना। दिस इज व्हाट ही हैज डन। तो इसका मतलब ये है कि 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 फ्रॉम x, 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 फ्रॉम y। सो 1/10 z ने x से लिया है, 1/10 z ने y से लिया है। तो प्रैक्टिकली व्हाट दिस मींस इज दैट x का सैक्रिफाइस जो है वो 1/10 है और y का सैक्रिफाइस जो है वो भी 1/10 है, ठीक है जी। एंड नाउ सिंस द सैक्रिफाइस, we know the sacrifice of x and y, we can simply subtract this sacrifice from their old shares। तो x का जो ओल्ड शेयर है which is 3/5, ओल्ड शेयर में से अगर आप उसका 1/10 जो उसका सैक्रिफाइस है x का वो माइनस कर दोगे तो हमें उसका नया x का नया शेयर मिल जाएगा। सिमिलरली y का ओल्ड शेयर है 2/5, उसमें से 1/10 आप माइनस कर दोगे which is the sacrifice done by y, तो आपको y का न्यू शेयर मिल जाएगा which is 3/10। तो x का नया शेयर निकल गया 5/10,
y का न्यू शेयर निकल गया 3/10 if you see over here, right? And z share all we already know is 1/5. हमने डिनोमिनेटर सेम करना है तो z के शेयर को 1/5 को 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिया and we get 2/10. So the new PSR becomes 5:3:2. और इसी न्यू PSR के बेसिस पे हमने नया कैपिटल जो था डिस्ट्रीब्यूट किया था. नया कैपिटल कितना था जो हमने निकाला था? 1,75,000. So that's it from my side for today. I will be coming up with another question where it will be which will also involve preparation of revaluation account and then the preparation of the capital accounts, and it will also include the concept of capital adjustment on the basis of new partners contribution, right? तो अभी हमने जो मेथड किया है वो नए पार्टनर के कैपिटल कंट्रीब्यूशन के बेसिस वाला मेथड किया है, ठीक है? उसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्वेश्चन में गिवन है और उसी बेसिस पे हमने कैपिटल एडजस्टमेंट करी है. इस सेशन में मैं आपको मेथड 2 पे नहीं लेके जा रहा. फर्स्ट ग्रास्प दिस एंटायर कॉन्सेप्ट, listen to the video, watch the video again. At any point of time you don't understand anything, you write a comment or you connect with me and I'll come back to you with more explanations, right? Thank you so much. All the best for your preparation and may you all score good marks and come out with flying colors. Thank you.